You're watching Truth versus Hype. We've come to Marathwada in Maharashtra, no stranger to water scarcity, but possibly facing its worst ever drought. And yet, these lush green fields of sugarcane indicate a deeper man-made dimension to the crisis, a reluctance to address the mistakes of the past, whether it is privileging one crop over another or undoing the political economy that makes such inequality possible. In many ways, what we're witnessing here in Marathwada is symptomatic of the hard choices that is being confronted by Indian agriculture and the failure if they are not addressed. In Osmanabad, deep in Marathwada, the green is deceptive. Here they tell us that the rains have come too late to save their fields of tur and urad and soybean. तो ये सारा जो है, ये आपने सोयाबीन लगाया, तो जो आपने सारा लगाया ये सब जून के आसपास लगाया होगा और बारिश बिल्कुल नहीं आई, तो एक तरह से ये सब वो हो गया, खत्म हो गया, सब फेल हो गया अभी, पूरा का सोयाबीन का फेल हो गया। ये जो येलो हो गया है सर, हाँ, दिस इज अ साइन ऑफ डिफिशिएंट वाटर। अभी ये मरने को चालू हो गया है, मर रहा है, इट इज डाइंग इट्स डेथ। ये बहुत ही खोखला है, इसका कोई वजन ही नहीं है, में कोई वैल्यू नहीं। In the backdrop of ruin stands fields of lush sugarcane. Cane, as we know, is heavily dependent on irrigation. Unlike other crops grown here, it consumes 10 times as much water. So why its aggressive promotion in a water-scarce region? Ironically, for that very reason. It's a hardy crop, it grows throughout the year and thus can withstand the fluctuations in weather. ये एरिया में शुगर के नहीं आ सकते, इसके दूसरा कोई हम क्रॉप ले नहीं सकते। क्यों? दूसरा क्रॉप आ ही नहीं सकता। क्या वजह है इसकी? बारिश कम है, पहले से ये ड्रॉट एरिया बोल के बोलते हैं पहले से। हाँ। और अब जो माइनर प्रोजेक्ट जो तैयार किया है गवर्नमेंट ने, उसमें पानी हमारे पास 1 साल के लिए रह सकता है। अच्छा। बारिश के दिन में सिर्फ 2 ही महीने बारिश होते हैं सर। I don't agree with that because in a region, you see, Marathwada is a severely drought-affected area. Most of the talukas, about 29 tehsils in Marathwada, are under rain shadow, and such a region should behave like a scarcity region. If you have severe water shortage in your region, you should behave like a scarcity region. But it's this complexity around sugarcane which means that if it is to grow, it has to be with prudence to ensure that irrigation networks are put in place, markets are put in place so that cane doesn't overwhelm other crops. But as we shall see, that's not really happened. Instead, despite years of poor rain, cane has continued its relentless march. Well, the sugarcane area has increased, and it has kept on increasing nearly every year since the past 5 consecutive droughts that Marathwada has faced. It is now higher than what it was in 2013 and 14, when 2014 was also a drought year. So it seems that the growth of sugarcane has been absolutely unstoppable, irrespective of what the rainfall has been. Ask the policy makers and they will suggest it's a free market. Farmers can choose what they like. Government has been very positive on that, and we are hopeful that crushing season, coming crushing season would start normally, and there should be no major problem. But as anyone familiar with Maharashtra knows, the idea of a level playing field is an illusion. The political economy that privileges cane remains deeply entrenched, despite its untenable nature. At the heart of it remains the appalling state of irrigation in Maharashtra and the inequality around access to water. Marathwada has 11 major dams. They took years to build and ran into major cost escalations. And yet they irrigate only a small fraction of the land. The irrigation department has recorded that about 20% irrigation potential exists in Marathwada. However, the actual irrigation that is achieved on ground is only about 4 lakh hectares, 4.4 lakh hectares. That comes to about 8%. Only 8% land of Marathwada is actually irrigated.
of that fraction, a bulk is sugar. Approximately about half the irrigated land is under sugar cane. It means that for the crops which are less water intensive, the irrigation is provided only to about 2 lakh hectares out of 50 lakh hectares of cultivable area. That's a very pitiable condition. But water inequity is not limited to diverting water from dams and canals. A bulk of irrigation in Marathwada, just as across the country, is through bore wells. Bore wells cost big money. It's mostly sugar farmers who can afford it. 1000 फीट बोर है। अच्छा, 1000 फीट को 1 लाख रुपए नीचे खोदने को लिए गया। 1 लाख रुपए उसमें लग गया, ड्रिलिंग का। हाँ, और 2 लाख रुपए वो पंप सेट होता है ना, पंप सेट का 2 लाख रुपए खर्चा है। टोटल पाइप पूरा उसका मिला के 3 लाख हुआ। टोटल पानी बाहर निकालने के लिए 3 लाख रुपए खर्चा गया। टोटल 7-8 बोर है, लेकिन वो 7-8 बोर है। कितने बोर चल रहे हैं? 2 ही चालू है। अभी इस साल चालू नहीं है, लेकिन जब बारिश होती है तो खाली 2 बोर चलते हैं। बाकी बोर फेल हो गए। हाँ। क्या ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि पानी का लेवल गिरते जा रहा है? हाँ, पानी का लेवल नीचे गया पूरा। वाटर पहले टेबल कितने फीट पे पानी या मीटर पे पानी मिलता था? 250-300 फीट तक लगता था। 250-300 फुट फुट पे पानी मिलता था। अब 450। अब 1000 भी फुट गया तो 500-600 पानी नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं रिकॉर्ड 1000 भी हुआ है। ज्यादातर 450-500 दिखाएंगे वो तक ड्रिलिंग करते हैं। हाँ। लेकिन कहीं कहीं हाइट भी होता है, ये साफ जैसे कि 1000 फीट खुदा है, फिर भी नहीं लगता है। ऐसे बहुत स्थान पे हुआ है वैसा। तो एवरेज 450-500 फीट तक पानी लगने की संभावना इधर है। But this unsustainable burden on the shrinking water resources of the area simply will not stop unless the economics of cane is made more equitable with other crops. But this simply doesn't seem to be the case. मराठवाड़ा में जनरली पानी का प्रॉब्लम है। कई साल से पानी बारिश ठीक से नहीं आ रहा है। तब भी आप लोग गन्ना फिर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि गन्ना तो बहुत पानी पीता है। लेकिन इसके सिवा चारा नहीं है ना कोई। इसके सिवा कुछ भी चारा नहीं है। हम बच्चे इसको लेके क्या करना? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। अगर दूसरा कोई ले लेंगे, कुछ भी नहीं आएगा, तो हम ही नहीं बचेंगे, तो क्या फायदा है उसमें? जैसे ये आपका 1 एकड़ गन्ना है, इसमें आपने कितना खर्चा किया? इसमें एक साल में 30 या 35 हजार रुपए खर्च हो जाता है पर एकड़। पर एकड़ 30 या 35 हजार खर्च हो जाता है। उसमें सारा कुछ आपका आ गया। मतलब इसका बीज, फर्टिलाइजर, लेबर, सब कुछ आ गया। और आप उसको कितने का बेच रहे हो? इसमें 30 टन हो जाता है। अच्छा आया तो 30 टन हो जाता है। 30 या 35-40 टन हो जाता है। और पर 1 टन का कितना मिल रहा है आपको? पर 1 टन का 1,500। So basically the calculation that we did, Manas, on the basis of that, that on an average they are earning about 60,000 per acre rupees per acre. तो आप 60,000 रुपए पर एकड़ कमा रहे हैं, ये 1500 रुपए के रेट पे, और आपका खर्चा 30-35 हो रहा है। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 1 एकड़ शुगर केन पे ऑलमोस्ट 30,000 रुपए का। 25-30 हजार हो जाता है। ये सही है? यस सर। अब उसका बताइए, जैसे आपने दाल लगाया, तुअर का और उड़द का पर एकड़ खर्चा एक क्रॉप का 15,000 के आसपास है। पर एकड़ आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? तो पर अंदाजा दाल सर, तूर, उड़द वगैरह के आसपास। इट इज अबाउट 5 to 10,000 rupees. Yes, and investment is 15,000, and we get a mere 5 to 10,000 rupees per acre. प्रॉफिट? Yes, profit. अच्छा। We invest 15,000. ओके। उसके बाद में जो फसल आती है, हाँ, तो वो अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो 1 एकड़ में 4 क्विंटल तुअर होती है, 1 एकड़ में 4 क्विंटल उड़द होता है जी। लेकिन उसका जो लमसम है। अमाउंट आता है, हाँ। और मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत है, तो वो जो पैसा आता है वो बहुत कम है। तो आपको प्रॉफिट कितना मिलता है? प्रॉफिट मार्जिन्स आर जस्ट मेयर 10 to 20% in pulses. The mandi at Sholapur, the nerve center for farmers across this region. Here, whatever dal has survived the drought has arrived at the godowns of traders. Prices of dal in cities is shooting through the roof. But traders explain why farmers do not get its benefits.
फार्मर्स का तो न्यू क्रॉप जब आता है तो 2 महीने में उसका माल वो पूरा सोल्ड आउट करके कैश ले लेता है। उसके बाद में बड़े बड़े स्टॉकिस्ट के पास वो माल रहता है, वो लोग तेजी मंदी करते हैं। अच्छा, तो उनके पास है जैसे बल्क में 10,000 टन 20,000 टन माल स्टॉक कर देते हैं, मार्केट में तेजी ले आते हैं, तेजी ला के फिर वो कैपिटलिस्ट जो रहते हैं वो लोग कमाते पैसा, फार्मर्स को एक्चुअली कॉस्ट वही मिलती है। आप भी तो कैपिटलिस्ट हुए। हम कैपिटलिस्ट है पर जो हमारा बहुत लिमिटेशन रहता है। Not everyone is convinced. Process would mean actually splitting the grain into two parts. You know, what we call dhuli hui dal is basically splitting into two parts. So which means the cost of production, cost of processing would not be more than 1 rupee a kilo. So if the procurement price is 45 rupees, 1 rupee you add it as the processing cost. Let's say I add another 10 rupees for the overheads and so on, marketing and so on. The produce should not be available in market for more than 55 or 60 rupees a kilo. But now we find it at 140 rupees and 150 rupees a kilo. This is all being cornered. That means the profit is all being cornered by the retail trade and the wholesale trade. What we found in the Marathwada dal mandis is part of a wider neglect of pulses, with the government from time to time making the right noises to push up production but with little follow-up. In the 2011 budget, rupees 300 crore was allocated to increase pulse production. But of that, 90% was spent on short-sighted efforts like moisture conservation, which is the lining of ponds and wells with plastic. And only a small fraction of that amount was spent on developing market support. At the mandi, they say the government, even though it announces a minimum support price, is rarely seen. सरकार की तरफ से कोई उनका बंदा नहीं आता यहाँ पे और कुछ उनका इंटरफेयर नहीं रहता, खाली पेपरबाजी रहती है कि हमने ये रेट डिक्लेयर कर दिया, हमने वो रेट। एक्चुअल मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है, वो उनका कोई यहाँ कभी प्रेजेंस नहीं रहता। यहाँ पे उनका कोई प्रेजेंस नहीं रहता। The absence of promoting pulses all the more apparent, given that this year, like almost every year, huge amounts are spent in importing pulses. You think about that tuar production in Maharashtra, which is the largest producer of tuar, only 2% is irrigated, right? And tuar doesn't need much of fertilizer either because they are nitrogen fixing. So in fact, they can save your fertilizer subsidy. Now compare it with sugarcane, where the capital cost per hectare of sugarcane irrigation, capital cost of creating that is 6.6 lakhs. 6.6 lakhs is the capital cost of creating 1 hectare of irrigation in Maharashtra through public irrigation. And you need to create crop neutral incentive structures if you really want to promote efficiency in the system. And from that angle, one possibility is that anybody growing pulses, they can be given 10,000 rupees, 15,000 rupees per hectare for saving water and also saving your fertilizer subsidy. Coming up, debt for sugar farmers, SUVs for mill owners. Will the sugar economy ever slow down? Welcome back. In drought-hit Marathwada, for the first time, questions on whether the sugar economy is doing more harm than good. But to ensure a more level playing field will mean to calibrate the growth of sugar mills and also reduce political control over them. On the ground, neither seems to be the case. These farmers in Osmanabad for years have taken their cane to this factory controlled by the family of a Congress politician. बसवराज पाटिल वो कौन है? वो एमएलए है। एमएलए? कौन से पार्टी के? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं। उनका कारखाना यहाँ कोऑपरेटिव के चेयरमैन है। कोऑपरेटिव के चेयरमैन? कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के चेयरमैन है। उनका फैक्ट्री नहीं है वो। आपका सारा चीनी इसी में जाता है? गन्ना वही फैक्ट्री को जाता है। When we meet the politician's brother, he tells us with confidence that there can be no alternative to sugar. जो तूर बोलते हैं उसको भी रेट नहीं मिलते हमारे को, तो हम जीने का कैसा? और इसके पहले जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो आप शुगर केन लेते हैं, तब उनके जो वो लोग जो कर सकते हैं, उधर के जो फार्मर जी रहे हैं, वो हमारे कर्नाटक मराठवाड़ा में के नहीं हो सकते। It is true that 10,000 farmers supply the mill. 400 others work in it. These numbers used to create a scare of any kind of change. But it's no one's case that sugar mills have to be closed, just that their growth is controlled to open avenues for other, less water-intensive crops.
After all, cane farmers are only a small fraction of overall farmers. But the cane lobby fights against change, since they are both mill owners and lawmakers. अब तोड़ के लिए अब रेट अच्छे थे तो उन्होंने बाहर से इंपोर्ट किया। इंपोर्ट के लिए पैसे है गवर्नमेंट के पास, मगर हमारे को रेट नहीं दे सकते। बट गवर्नमेंट जो है, हाँ, आप भी तो गवर्नमेंट ही हैं। है ना, हम कहाँ नहीं बोल रहे। आपका सरकार, आप कौन से पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी। हाँ। तो सारा राज तो आप ही का है, तो आप जो रेट चाहें आप दे सकते हैं। प्रॉब्लम कब क्रिएट हुआ है? आज हुआ है। ये तो आप कह रहे हैं कि इतने सालों से ये बाकी जवार को क्रॉप का रेट नहीं मिल रहा है, तो इतने साल 50 साल से तो कांग्रेस का राज है। It's this hold of the political establishment on sugar which has created a glut, not just in Maharashtra, but across the country. Global prices have crashed, further stoking the crisis. They overproduced it, and unfortunately the price of sugar, which was very good till a year and a half back, you know, it was 36 rupees, 38 rupees a kg, it went up to that. So that led to massive increase in the plantation of sugarcane, but then the prices collapsed and now we are stuck. Increasingly, the idea of sugar as a safe bet does not appear certain. उनका पेमेंट जो बताया था वो नहीं दिया, बहुत ही कम दिया। उस साल शुगर केन वॉज प्रोक्योर्ड फॉर 2250 rupees, 2250 rupees per ton. But the farmers who sent their sugarcane to Bhausa Birazar, they actually received an amount of 1500 rupees per ton. There is a deeper cost to the cane economy. The crushing needs a great deal of water. Like so many other sugar mills, this one squats and draws water from the already depleted water source in the region. आपको फैक्ट्री में कितना पानी का जरूरत पड़ता है अंदाजा? कम से कम 1 टन को 100 लीटर से, और हम क्रशिंग करते हैं 4 लाख। अच्छा, 4 लाख टन आप क्रश करते हैं और 1 टन को 100 लीटर लगता है, तो काफी सारा पानी आपकी यूज हो जाती है इसमें। अच्छा, ये पानी कहाँ से आता है? बेनीतोरा डैम में से। बेनीतोरा डैम में से आ जाता है। अच्छा, अभी उसमें पानी है डैम में? नहीं है, अभी पूरा डाउन है। Now, confronted by the worst possible drought in decades, the Maharashtra government is contemplating for the first time to disallow the crushing of sugar in the Marathwada districts. And this is an indication that the changed political equation in Mantralaya has finally come into play in sugar country. अभी ये बताइए कि अभी जैसे क्रशिंग तो बंद किया हुआ है, तो इस सब गन्ने का क्या होगा फिर? जानवर को चारा होगे। जानवर को चारा करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, ऑलरेडी चारे में जा रहा है? नहीं, ऑलरेडी चारे में जा रहे हैं, क्योंकि इसकी हाइट नहीं बढ़ रही ना। गन्ना कोई काम का नहीं है, अभी इसको काट के ये करना पड़ता है, चारा करना पड़ता है। चारे में देना पड़ रहा है। और चारे में देना पड़ रहा है नहीं साहब, हमारे घर में जो जानवर है उनका पेट भर रहे हैं, बस दूसरे को कहाँ देना है। But the pull of the cane economy is strong. There are reports that the new government wants to dilute the few rules that exist regulating the growth of new mills. Not only are the clearances still being given, but the current cooperatives minister had actually said when the government was just formed that even the one single sort of rule that a sugar commissionerate has of having 25 kilometers between two sugar factories can be diluted to encourage competition. Even in this time of crisis, owners are confident that if crushing is allowed, they will somehow manage water. There is only 30% rain of average rainfall, but the level in the dam is not. It's less than 0. It's minus. We will manage because Kundalika Dam we are having some water, and from there we will be lifting the water for our processing purpose. The strain already being felt, all the more in the season of Ganesh, a time to spend, a time to celebrate. But it is a time when even cane farmers, for a change, find themselves mired in debt. कर्जा है सबके सर पे होगा। आपके सर पे कितना कर्जा है? मेरा सर पे 25,000 रुपए कर्जा है। मेरे सर पे 30,000 कर्जा है। 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए? 2,10,000।
मेरे पे है अभी ये साल का केसीसी लोन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उमरगा का 2,25,000 है. But those in charge, controlling both banks, mills as well as levers of influence, ensure regular bailouts, insulate them from these shocks. आज मेरा फैक्ट्री जो है माइनस में चल रहा है, उसको क्या करने वाले. बट आप, मैं देख रहा हूँ आप यहाँ खड़े हैं, बहुत अच्छा आपके पास ये मर्सिडीज का गाड़ी भी है ना? तो इसको देख के कौन कहेगा कि आप बुरा हालत में हैं? ये मेड इन चाकन में है. क्या मेड इन चाकन बोले तो पुणे में. अरे तो इम्पोर्टेंट चाहे नहीं वो है. मेड इन चाइना हो या चाकन, मगर मेरे घर में लेकिन जब इसका दाम तो दाम है ना, रेट तो क्या इसका बोल रहा सेम हूँ, है. 1967 में इंग्लैंड हर एक आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता. नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1967 में जी मेरे पास जब विलीज थी, मगर मैं आज इम्पोर्टेड गाड़ी नहीं रख सकता. सिर्फ ये मेरे सब फार्मों को संभालने की वजह से ऐसा हो गया. मैं बोला तो आप कह रहे हैं बेंज रख रहे हैं, आप कह रहे हैं आप इम्पोर्टेड गाड़ी नहीं रख सकते. ये तो जर्मन गाड़ी है. ये तो मेड इन इंडिया है. अरे मेड इन इंडिया इसका मतलब ये कि असेंबल्ड है, बट इट इज इम्पोर्टेड कार ना. मैं क्या बोल रहा हूँ, मेड इन इंडिया बोल रहे हैं क्या इम्पोर्टेड बोल रहे हैं, अब तुम ही बताओ. अच्छा, आप कह रहे हैं ये इंडियन कार है. हाँ, मेड इन इंडिया है ना, चाकन में बनती है तो मेड इन इंडिया है. अच्छा, कितने का गाड़ी है ये? 55 लाख का. तो हर एक आदमी इस गांव में कितना लोग है जो 55 लाख का गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं? गाड़ी अफोर्ड करना या नहीं करना, ये उनके दिल की बात है.